Good morning, everyone. Welcome to Prebell with Team William O'Neill India. I'm Rushid Sejpal, Equity Analyst at William O'Neill. Today, FEB 11 2025, and a disclaimer that the registration granted by the SEBI, the membership of BASL, and certification from NISM is no way guarantee performance of intermediary or provide any assurance of the return to investor. Investment in the security markets are subjected to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Okay, so yesterday, many of you might have joined the session, and we discussed the important level was 400 to 450, but वो तोड़ दिया, ठीक है? So once that level is breached, it's not good because जो follow through day हमको मिला था last Tuesday को, उसका low was around 425. सो आइडियली व्हाट हैपेंस जब भी फॉलो थ्रू डे होता है उसका लो होल्ड करना इंपॉर्टेंट होता है, राइट? बट इट हैज ब्रीच द लो, इट हैज ऑल्सो ब्रीच द 10 एक्स डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 ईएमए। ये जो पिंक लाइन है ना वो 10 ईएमए है, ठीक है? ऑलमोस्ट वी सस्टेन अबाउट दैट फॉर 7-8 सेशंस एंड देन वी हैव ब्रीच दैट लेवल, सो नॉट गुड. Now, what's next is this green line. If you can see over here, that is the 21 DMA, 21 day moving average. वो 270-80 के आसपास है. So broadly, for today's session on downside, 250 to 300 is the key zone. I think अगर हम 250 to 300 के बीच में बॉटम बना के फिर से ऊपर नहीं जाते, क्योंकि आज 4 दिन से हम लोग ऑलरेडी नीचे जा रहे हैं. आई थिंक कंसोलिडेशन वाज नीडेड. दैट्स व्हाट आई टोल्ड yesterday, that 2-3 days of consolidation was fine, but yesterday it should have reversed. Okay, if not yesterday, then the focus on the reversal will be today. So if we breach 250 to 300, अगर ये जोन में भी हमको सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है, 250 to 300 के बीच में, then I think we might see some sharper fall. ठीक है, फिर से हम एक नया लो टेस्ट कर सकते हैं. We might come somewhere till this 766 or maybe below that. We don't know. We never know once the market starts falling. Right. Because if you can see the trend line over here, we have already touched the upper half of upper trend line. जो ऊपर की साइड की जो 750 से 800 अराउंड थी वो हमने ऑलरेडी टच कर ली थी. So let's see if we reverse from here or not. Otherwise, we might see some 2-3-4% of fall again in the market. So you need to be careful around that. So results today. Lupin, IRCTC, Vodafone, SAIL, NBCC, EIH. I think more than 200 companies are reporting. So we are in the last leg of the earning season. I think आज कौन सी 11th Feb है, तो maybe 2-3 दिन और and all the will be out. All the results will be out, and there is a lot of rush in the reporting in current market. If we discuss few results, then Ashoka Bitcoin, good results. The revenue was down 10%, but the profitability and margin was good. Crystal's Q3 revenue was flat, almost YOY, but the profit was up around 7.7% YOY because there was a 1.8% of margin expansion to 31.4%. Even Apollo Hospital, the revenue was up around 14% YOY to more than 5,000 crore, and the profit was up 49% to 379 crore. Here also margin expanded around 80 bits. Hospital as a sector doing really good. Okay. National Aluminium, that was a good growth in Q3 revenue, 40%. Profit multifold बढ़ गया है. 1566 करोड़ आया 470 से, और मार्जिन एक्सपांडेड 26.8% टू 49.9%. Right. If you look at few other result, Eicher Motor, it missed estimates. The margins की वजह से थोड़ा मिस हुआ. बाटा का भी वही है, muted है. Grasim, not a good result. EBITDA down around 48%. हिंडाल्को के लिए भी नेगेटिव है. नोवेल्टिस का जो Q3 रिजल्ट है उसमें EBITDA डाउन है अराउंड 18 to 20%. सिमिलरली गैलेक्सी सर्फेक्टेंट का रिजल्ट थोड़ा वीक है.
अगर दूसरे पॉजिटिव रिजल्ट देखे तो नायका नायका रिपोर्टेड अ वेरी वेरी गुड नंबर, राइट. एंड इवन इफ यू लुक एट द एमटार टेक ने भी एक अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर किया है. सो दीज आर द स्टॉक्स दैट में शो सम रिएक्शन, राइट. सो नेक्स्ट, यूएस मार्केट पॉजिटिव रहा. नेगेटिव, काफी नेगेटिव था आई थिंक फ्राइडे के सेशन में, बट वो रिकवर किया. बट अभी देखो तो यूएस फ्यूचर इतना ऊपर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, थोड़ा नीचे ही है, राइट. एंड एशियन मार्केट में आई थिंक जापान इज क्लोज्ड एंड कॉस्पी इज ट्रेडिंग हायर. ओके, सो नाउ गिफ्ट निफ्टी, इट डज इंडिकेट्स अ पॉजिटिव ओपनिंग. 30 40 50 पॉइंट का पॉजिटिव ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, विच इज गुड. वी माइट ओपन अबाउट द 400 लेवल, राइट. बट वी नीड टू सी दैट इफ वी सस्टेन, जो कल का लो है अगर वो ही ब्रीच नहीं होता है, देन दैट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो. द सेकंड सिनेरियो विल बी 250 to 300 वाली जोन का सपोर्ट, राइट. On the higher side, I think we will be looking for first Nifty to reclaim that 400 to 450 वाला zone और वहां से ऊपर जाना. And the last part, the stock of the day, I think Avanti Feeds. This looks really good. So it reported its number yesterday, and numbers were really good. बहुत अच्छे numbers थे. अभी that is nearby zone. If you look, the profit was up around 86%, revenue growth around 9%, and margin expanded almost 4% from 7.7 to 11.7. So एक अच्छा expansion है. It has formed a very good base if you can see over here, right? The cup with handle base that has been really good. यहाँ पे लो वॉल्यूम पे फॉल आया था पूरा, देखो जो भी आया 15 20 25% का फॉल लो वॉल्यूम पे आया था, एंड अभी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया है स्टॉक में. इवन द बैड डिमांड इज ए दैट शोज अ गुड एक्यूमुलेशन, ऑलरेडी बाय जोन में है. तो आई डोंट नो इफ अगर अच्छा रिजल्ट के बाद ज्यादा ही पॉजिटिव रिएक्शन दे दिया, देन डोंट चेज इट, वेट फॉर इट टू बी बैक इन द बाय जोन. प्राइस स्ट्रेंथ इज सुपर, ब्लू डॉट है यहाँ पे. सो दैट्स एन बेस्ट पॉसिबल प्राइस स्ट्रेंथ, लाइक 52 वीक हाई पे आरओई 16% है, फंड होल्डिंग फ्लैट है, और रीसेंट क्वार्टर्स के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं. अगर ये वाला अभी अपडेट नहीं हुआ है यहाँ पे, कल ही आया था, आज हो जाएगा. But yes, the overall results have been good. So this stocks looks too good to watch out. I hope you had a good session. Thank you for joining. See you again tomorrow at 8:45 a.m.